एक solution texture. So what is an X solution? It is a solution कहि परिबो जोटा कि mixable at higher temperature. So कि तुम्हारा liquid हो कि solid हो, they will be mixable. They can mix with each other at higher temperature and will separate at low temperature. Suppose we have two substance A and B. So A and B में high temperature रखियो, they will produce compound AB, but they will mix with each other. तो से माने AB produce करेंगे at high temperature. So at high temperature they are mixable or they can mix with each other, but at low temperature they will separate. So low temperature से माने separate है. Suppose हमें एमती denote करी परिबा, एटा होची A suppose धर, एटा होची B. So high temperature रे से माने गोटे compound produce करी परिबे, mix एक रे, हाँ बट गोटे कंपाउंड प्रोड्यूस कर परिबे, बट लो टेम्परेचर रे ए तार अलगा हो जिवो, बी तार अलगा हो जिवो. सो एक सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन और यू कैन से सब्सटेंस, दे आर मिक्सेबल एट हाई टेम्परेचर and they will separate at low temperature. The example of this structure is your K feldspar and albite. So K feldspar, it is KAl Si3O8. Then albite is your NaAl Si3O8. So these two substances, they are mixable at high temperature. So if you keep these two at high temperature, they will mix with each other to produce a compound that is called as anorthoclase. Anorthoclase. तो देखो हाई टेम्परेचर हम रखिबा, at high temperature they will produce compound called anorthoclase. Anorthoclase जो आमर ओलिविन थर फॉस्फेट हाइलाइट सीरीज अच्छी तांको भितर इंटरमीडिएट मेंबर अच्छा सेमती आंको भितर गोटे इंटरमीडिएट मेंबर आसे अनर्थोक्लेस त माने ये दि जण मिसिले प्रोड्यूस हो का एटा तुमे के NaAl Si3O8 बोले लिख पारे. सो दिस मिक्सेबल कंपाउंड, बट एट हाई टेम्परेचर जो टेम्परेचर ड्रॉप करिवो, they will it will separate as K feldspar and albite. So temperature इतले डिक्रीज करिवा, so सेपरेट हे जबे K feldspar अलगा हे जबो, albite अलग हे जबो. So during separation, मतलब separate होती, they produce a type of texture. This is called as your X solution texture. So X solution, it is a type of texture that produced because of separation of two mixable solid at a low temperature. दीटा mixable solid low temperature separate होती, समाने produce करने जो texture तक वजह X solution texture. So K feldspar, albite दिखाती गोटे X solution type texture that is called as porthite. कहते हैं porthite texture, गोटे कहते हैं mesoporthite texture, कहते हैं antiporthite texture. So porthite texture, mesoporthite texture, antiporthite texture.
So portite texture, it is between K feldspar and albite, where K feldspar is greater than albite. So सब बड़े मन रखिबो, these three type of texture is exist between K feldspar and albite. So K feldspar यदि ग्रेटर होला ताले परथाइट को आजे, जे अधिक थाए ताकू होस्ट बोली को आजे, जे लेस थाए ताकू गेस्ट बोली को आजे. So in case of mesoporthite, K feldspar is equal to albite. In case of antiporthite, K feldspar, it will be less than albite. So it will be guest, this will be host. जार अमाउंट अधिक थाए से हबो होस्ट, जार अमाउंट लेस थाए से हबो गेस्ट. सो परथाइट टेक्सचर, मेसोपरथाइट, एंटीपरथाइट तीनटा टाइप रो तुमे टेक्सचर पाइबो अंडर एक्सोल्यूशन. बा तो एक्सोल्यूशन टेक्सचर कहती, बा तू कहि परिबो एक्सोल्यूशन लामेला. सो लामेलार टाइप रो मोर एंती लंबाले सब सूता भलिया डिपोजिट होते तुम लामेलार कहै है ना. सो एडी तुम्हार परथाइट, मेसोपरथाइट, के फेल्सपार, अल्बाइट ए माने लो टेंपरेचर रे दे कैन शो यूटेक्टिक, से माने यूटेक्टिक भी शो करो, यूटेक्टिक रिलेशन है. सो डाल तुम्हारा एक सॉल्यूशन टेक्सचर. Then I will move to intergrowth texture. So what is an intergrowth texture? So it is formed by simultaneous crystallization of two component. So दीटा component रे simultaneously crystallize होती, से टाइम में तुमने intergrowth texture produce करो. So this will happen in at eutectic point. ता कोट वे eutectic point रे तुम डायोक्साइड एनाथाइड नहीं परिबो, नले हम एग्जांपल निजो डायरेक्ट एठी ऑर्थोक्लेज क्वार्ट्ज. तो ये जो यूटेक्टिक पॉइंट अच्छी इटी इंटरग्रोथ टेक्सचर देखा जाए. सो यूटेक्टिक पॉइंट इट इज प्रोड्यूस ए कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरग्रोथ, जोटा कि टू और मोर क्रिस्टल और मिनरल जितबे तुमरा साइमल्टेनियसली क्रिस्टलाइज करथले करू थांती सेतरा प्रोड्यूस हुए इंटरग्रोथ टेक्सचर. तो एग्जांपल हो हमरा इंटरग्रोथ अंडर तुमे टाइप्स लिख परिबो. रोजी ग्राफिक टेक्सचर, so graphic texture it is intergrowth between quartz and orthoclase. So quartz orthoclase they show eutectic relationship. तो तांकर eutectic composition होउची quartz orthoclase रो eutectic composition मन रखथिबा quartz is to orthoclase 27.5 is to 72.5. हमारा डायोक्साइड एनाथाइड होथिला 5842, दिस वाला 27.5 and 72.5. तो यही कंपोजिशन जेतरे मेल्ट रे आसीबो समाने साइमल्टेनियस क्रिस्टलाइजेशन करिवो एंड दे विल प्रोड्यूस ग्राफिक टेक्सचर. संग प्रोड्यूस करिवे ग्राफिक टेक्सचर. So granophyric texture out अच्छी, granophyric texture. So in granophyric texture it is, you can say, the finer variety of graphic texture. So graphic texture of finer variety तुम्हें कोई परिवा ग्रानोफाइरिक. तो ग्राफिक ताहले ला कोर्सर
कोर्सर ग्रेन इंटरग्रोथ स्ट्रक्चर आउ ग्रानोफाइरिक है फाइन ग्रेन इंटरग्रोथ स्ट्रक्चर वाला ग्राफिक ग्रानोफाइरिक तीरा इंटरग्रोथ आउ गोटे आम लिखा मिरमेकाइट so it is the intergrowth between quartz and plagioclase क्वार्ट्ज एंड प्लाजियोक्लेज तुम्हें परथाइट को भी कहि परिबो होछि कि इंटरग्रोथ टेक्सचर परथाइट जोड़ा में पूर्व पढ़ले एक्स सॉल्यूशन रे सो सी भी तुम्हारा यूटेक्टिक रिलेशनशिप देखाए दे कैन आल्सो शो इंटरग्रोथ टेक्सचर सो हमर इंटरग्रोथ टेक्सचर है ग्राफिक ग्रानोफाइरिक मिरमेकाइट तबरे परथाइट भी तुम्हें चाहिए ऐड कर करे सो एटी हला तुम्हारा इंटरग्रोथ टेक्सचर next comes to flow texture so magma तले flow करू थाए उधर तुम्हारा सरफेस को आज वोल्केनो आसे तापरे इट विल फ्लो सो उधर magma flow करू थाए सेतरे डिफरेंट टाइप ऑफ तुम्हारा टेक्सचर प्रोड्यूस करे ताको हमें फ्लो टेक्सचर बोली कोन सो टेक्सचर दैट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फ्लो ऑफ magma तले फ्लो करू थाए ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द magma ताको हमें फ्लो टेक्सचर कहते सो दीज आर टेक्सचर फॉर्म ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ magma तो तादरे गोटे आसो पूछी कि ट्रैकिटिक टेक्सचर तो इसको ट्रैकिटिक टेक्सचर so it is basically found in our cyanide magma so suppose गोटे magma एटी फ्लो करछि तादरे तुमरा elongate mineral पूरा आपको हम कहते lath shaped plagioclase लाथ से फेल्सपार तुम कहि परिबो लाथ शेप रो लाथ माने जो सूता टाइप रो हला लामेला कहउछ कि लाथ कहउछ देखो स्ट्रिंग टाइप रो हला लाथ शेप कहै यदि लाथ शेप रो प्लाजियोक्लेज अछि यदि एठी magma टा फ्लो करछ ताले ड्यूरिंग फ्लोएज दिस लाथ शेप विल अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर समान कहै निज को पैरेलल अरेंजमेंट है so this texture is called as cyanide texture जदि अरेंजमेंट है कि रहबे ताले से ट्रैकिटिक टेक्सचर बा cyanide टेक्सचर कहबो जदि रैंडमली रहबे जदि एबा रैंडमली तुमे पाइबो ताल ताको पिलोटैक्सिस कहम पिलोटैक्सिस so cyanide texture pilotaxis texture so cyanide texture it is a type of or trachytic texture it is a type of texture that produced during flow of the magma so you can say in cyanide magma or plagioclase laths are arranged parallel to each other in a cyanide magma अब हम कहते ट्रैकिटिक टेक्सचर जदि प्रॉपर अरेंजमेंट है द cyanide will be ट्रैकाइट लिख ट्रैकाइट कहीं कहते ना cyanide रो वोल्केनिक इक्विवेलेंट होची ट्रैकाइट cyanide रो जहा कंपोजिशन ट्रैकाइट रो से कंपोजिशन तो cyanide magma तले सरफेस को आसबो तार कंपोजिशन है जो ट्रैकाइट बोथ केसेस ले प्लाजियोक्लेज अधिक थाए तो ट्रैकाइट टेक्सचर कहते कहीं जति फ्लो टेक्सचर हुए से सब वोल्केनिक हुए
magma बा जो भल से फ्लो कोड कर पारो जो सरफेस को आसो लावा हिसाब जो अधिक इजीली फ्लो कर पारो सेही टाइम रे टेक्सचर सब प्रोड्यूस हो ताको हम कहबा सिएनाइट magma और ट्रैकाइट magma तुम कहि पारे ट्रैकाइट टेक्सचर कर so then during flowage other things also happen suppose during flowage during flow of the magma the elongate mineral achanti they can arrange themselves in polygonal or triangular shape so एमती कौन है तुम्हें थोड़ा इमेजिन करो जे कि पानी ऊपर किसी काठी गुरा भासी जाउछ तो काठी गुरा से माने कोन पाखापाखी पळाय कि जोड़ी हो जिवे कि किछ गोटे शेप बने देबे मतलब से माने मूव करते क्लस्टर है मूव करते देखिए सब यदि कि पतर पतर हो कि कौन हल्का जिनस यदि पानी जाऊँ से सब क्लस्टरिंग कर गोटे जगह क्लस्टर हाँ चेष्टा करते से भाया तुम magma जो फ्लो करे कौन एलोंगेट मिनरल बा लिनियर मिनरल गुरा थाए लिनियर मिनरल माने जो पेन भाया तुम भाव है तो लिनियर मिनरल तक गोटे डायरेक्शन में लिनियर होता जो कलमनार तुम्हें पढ़ल सेप्रे से भाया लिनियर मिनरल थी कलमनार आउटे पतला हेल्ले से कौन लिनियर बा सूता भाया जोड़ा कहली है कि हेयर भाया तुम भाव पतला पतला सब लंबा लंबा थी सो स्मॉलर थीन एलोंगेट टाइप ऑफ थिंग by elongate mineral magma रे थे they will arrange themselves in a polygonal fashion so निजु गोटे कौन polygonal fashion ने arrange करेंगे so during flow of magma the elongate mineral that they can arrange themselves in a polygonal fashion and the area between them जो the polygonal fashion से मैंने arrange है the area between them is called as mesostasis mesostasis so area between them is called as mesostasis so here also can be called as mesostasis so the mesostasis sometimes it filled with grain mesostasis sometimes filled with grain like this sometimes it filled with glass if the mesostasis filled with grain if the mesostasis रे तुमरो grain रहला ताले it is called as intergranular texture it is called as intergranular texture if the mesostasis it filled with glass so it is called as intersubtle texture so you can write down during the flow of the magma the elongate mineral they arrange themselves in polygonal manner and will enclose the area called mesostasis so that mesostasis if it is filled with grain it is called as intergranular if it is filled with glass or glassy material it is called as intersubtle texture so these are type of texture that produce during flow of the magma so देखा reaction texture so what is a reaction texture so reaction texture it is formed if the early form if the reaction between the early form crystal and melt is incomplete if the reaction between the early form crystal and the melt is incomplete that means मतलब magma crystallization start पे suppose हमें देखिबा कि डाइऑक्साइड एनोथाइड केस रे कि जे कोनसी बाइकम्पोनेंट केस रे कि डाइऑक्साइड एनोथाइड केस रे बड़े बड़े डाइऑक्साइड आगे क्रिस्टलाइज करे तो सेटा है अर्ली फॉर्म क्रिस्टल so dioxide will crystallize fast that will be early form crystal or sometimes in case of phosphate silica phosphate will crystallize fast so during initial crystallization phase so the early form crystal it might react with the melt or may not react with the melt तो आमे पढ़ी यूटेक्टिक केस रे जोटा डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए so it's simple produce on the liquidous line
So it does not react with the magma. So magma सहित react करे नहीं. But there are some bicomponent relationship which called as peritectic. तो हम कौन कौन peritectic जोटा कि अर्लीफॉर्म क्रिस्टल जहाँ अर्लीफॉर्म क्रिस्टल प्रोड्यूस होइथिबो से magma सहित react करिवो. magma सहित react करिकी से प्रोड्यूस करिवो another mineral. तो माने सपोज हमें कहबा कि there are some oleifum crystal here. So we'll take some oleifum crystal like this. So as suppose this is olivine phosphorite Mg2 SiO4, and in melt we have both phosphorite plus SiO2. So initially phosphorite is crystallized. So this phosphorite crystal it react with the melt. से कौन करियो melt सहित react करियो. तो माने Mg2 SiO4 it will react with SiO2 to produce 2Mg SiO3. So this is your phosphorite, this is your quartz, this is instatite. So the reaction will start from the grain boundary. Grain boundary start करिवो. तो एटा हम एनालाइज करी देखु तुमको. तो रिएक्शन कोन हबो ये ग्रेन बाउंड्री स्टार्ट हो ता माने ये जो फॉस्फेट क्रिस्टल टा SiO2 सहित एतरे रिएक्ट करिवो से पुनी मेल्ट हे जो इंस्टाटाइट से कोन हिजो इंस्टाटाइट मेल्ट को कन्वर्ट हिजो ता माने जहां फॉस्फेट क्रिस्टल प्रोड्यूस हेतला अगेन से मेल्ट को पड़े जहां फॉस्फेट क्रिस्टल हेतला से अगेन मेल्ट करजो बाय दिस रिएक्शन इट विल कन्वर्ट टू इंस्टाटाइट ता माने दिस फॉस्फेट विल ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय सिंपल इनसा कहया गले तो फॉस्फेट इज ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय नो फॉस्फेट क्रिस्टल जहां अछि सेटा ग्रेजुअली नष्ट होय से रिएक्ट करके कन्वर्ट हे जो कुआडू इंस्टाटाइट तो इट विल ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय सिंपल सो इट ग्रेजुअली तुम्हारा ग्रेन बाउंड्री रो स्टार्ट हुई कौन ग्रेन बाउंड्री रो स्टार्ट हुई तो ग्रेन बाउंड्री एमती रिएक्शन स्टार्ट हवा देन सपोज जो आम ब्लैकेन कर से पार्ट रो सब कन्वर्ट हो गलानी धीरे धीरे कौन इंस्टाटाइट ठीक अच्छे जदि यही पॉइंट ऑफ टाइम रे जदि रिएक्शन कौन से रीजन जो कंटिन्यू करि पारला नाही कहना ये सब रिएक्शन चलिया हेले कौन दरकार रिएक्टेंट दरकार यदि रिएक्टेंट अवेलेबल अच्छे ताल रिएक्शन हम एंड ईच रिएक्शन अकर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर so this reaction occurred at 1557 degree temperature so it 1557 degree temperature occur करे so if all these things any things goes any in equilibrium condition यदि कौन से in equilibrium condition आसला कि टेम्परेचर चेंज हो गला सडनली कि अदर कौन सी थिंग हला ताले द रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड तो फॉस्फेट टा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हबो नाही फॉस्फेट क्रिस्टल टा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हबो नाही so this will be phosphorite crystal एटा कौन रहबो phosphorite crystal रहबो ता अराउंड तुम जानि परिबो जे रिएक्शन हेछि बोली so this is called as your reaction rim so जदि reaction between oleifum crystal and melt is incomplete जदि complete हबो ताले phosphorite टा completely कोड कन्वर्ट हेछि इंस्टाटाइट जदि complete हबो हम reaction rim पाइबा नाही काना तो फॉस्फेट पुणी कंप्लीटली मेल्ट हो कंप्लीटली कन्वर्ट हो इंस्टाटाइट जदि इनकम्प्लीट है अराउंड फॉस्फेट यू विल गेट ए रिम ऑफ रिएक्शन सो जदि तुम्हारा रिएक्शन बिटवीन oleifum क्रिस्टल एंड मेल्ट इज इनकम्प्लीट देन रिएक्शन रिम विल प्रोड्यूस around the oleifum crystal so oleifum crystal ura रहला ता around गोटे reaction rim produce so this is called as your reaction texture so reaction texture it occur at peritectic point so write down this thing the जो तुम्हारा intergrowth texture it occur at eutectic
So reaction texture it occur at peritectic point. So reaction texture it occur at peritectic point. So there are two types of reaction rim. We have two types of reaction rim. तुम दीटा type रा reaction rim पाइबो. One we called corona. Another is called aliphatic border. So corona it is occur by primary magmatic reaction, or you can say if the earlyform crystal it will react with the magma from which it is formed. जो magma रो से produce है सही magma से तो react करियो ताले तक कौनती primary magma. ठीक है तो सेते बेले जो reaction rim produce हो तुम कहबो corona. जदि फर्स्ट साइड जो magma produce होईची सेठी reaction न करी कि आउ कोनोसी neighboring magma रे जाई reaction करिवो ताले सेटा हबो secondary. तो इठी तुमर produce by magma primary magmatic एटा होची secondary magma. Secondary हेले एटा aliphatic border कहै. So there are two types of reaction rim. One is corona, one is aliphatic border. So corona it is produced when earlyform crystal react with a primary magma. If earlyform crystal react with secondary magma, it will be produce the reaction rim called as aliphatic border. The cumulus texture. कौन जी बात? Cumulus texture. So हम कहले जिते बड़े earlyform crystal it react with the magma तरे reaction rim producer. But सबु केस रे जो earlyform crystal हुए से माने magma साथ react करते नहीं. Example तुम्हें डाइऑक्साइड एनोथाइड कथा नहीं हो से माने reaction करते नहीं. जहाँ पे earlyform डाइऑक्साइड था it does not react with the magma. It is कहले magmatically dead. So जो earlyform crystal उड़ा magma रे रहिबे. Suppose these are earlyform crystal here. So they will produce a texture called cumulus texture. So cumulus texture it is formed by can say segregation of earlyform crystal in the magmatic chamber. जो earlyform crystal अच्छी, so earlyform crystal जदि react न करिवो magma सहित से कौन magma रे float हेक करिवो बा तळको खसी जिवो depend upon its density. So सही earlyform crystal through रे जहाँ texture produce हुए that is called as your cumulus texture. So यदि earlyform crystal एगुरा है तांका मझिरे रहिथिबे कोन थिबो fluid आउर थिबे काने earlyform crystal माने magma टा completely crystallize करिथिबो कि magma टा completely crystallize हेइ नथि. So this the liquid between the cumulus texture बा हमर आवर दिन से बोलिएले. So form of the segregation of earlyform crystal तो एठी earlyform crystal नाम कोनथि cumulus. Cumulus. So the liquid between the cumulus it is called as an intercumulus liquid. Intercumulus liquid. So intercumulus liquid with progressive crystallization. First earlyform crystal first earlyform crystal formation हेइथिबे. तापरे तुमर रहइबो कोन जोरा intercumulus liquid अछि से माने crystallize करिवे. तो जो intercumulus liquid अछि माने तले crystallize करिवे they either show overgrowth on this crystal ता माने growth बेले आ ऊपर मे भी से माने चढ़ी जाई पार एमति कि आंकुटो सेपरेट है कि तांको सहित से माने कोनोसी कनेक्शन रहइबो नै.
So the intercumulus liquid, when they will crystallize, they either show overgrowth on the cumulus crystal or they will crystallize separately. ସେମାନେ separately crystallize ହେବେ. Suppose ଏଠି हमरा ଗୋଟେ crystal ଧର crystallize ହେଉଛି, so this is from intercumulus liquid, this is aliform crystal, it is separately crystallized. But if it will show overgrowth, ता ऊपर चढ़ी crystallize हो, it will show overgrowth from the cumulus crystal. So accordingly we have three types of cumulus texture. One is your orthocumulate, mesocumulate, adcumulate. Orthocumulate, mesocumulate and adcumulate. So orthocumulate, it is a type of texture that produced through it is produced when the aliform crystal the intercumulus liquid crystallize separately from the cumulus. So it is tomorrow you can write down the intercumulus liquid crystallize separately from the cumulus. Intercumulus liquid crystallized separately from the cumulus. So if the intercumulus liquid, it will show overgrowth on the aliform crystal. যদি it will show overgrowth on the aliform crystal, it is called as your adcumulate. যদি সে separate crystallize হবে তাহলে orthocumulate. If the intercumulus liquid, it will show overgrowth on the aliform crystal, it will called as adcumulate. A mesocumulate, if it is partially show overgrowth and partially separation, it is called as your mesocumulate. যদি partially তোমার separation দেখিয়েবা, partially মোর দেখিয়েবা overgrowth, তাহলে mesocumulate. It is intermediate between ortho and ad. It is intermediate between orthocumulate and adcumulate. So zoning occur in solid solution magma. Solid solution so during crystallization of solid solution, if there will be disequilibrium or inequilibrium happens, so it is commonly produced by inequilibrium during crystallization of solid solution magma. So the more solid solution crystallization time inequilibrium, so rapid cooling हेगला कि other कौन सा thing गला जो तरह के crystallization process टा inequilibrium condition को गला, तो सही केस रे मोर zoning produce. So in that zoning, a low temperature mineral rim will produce around a high temperature mineral core. Example तो मैंने वो plagioclase, example कौन करा plagioclase. दूसरे तुम्हारा zoning एमती देखा हुए center रहेला high temperature, that is calcium, रहेला sodium. So plagioclase बहुत frequently देखा है होची zoning. Zoning means area wise केमती divide ही चंदी. तो calcium रहेगा core रे, sodium रहेगा rim रे. जो डी crystallization हो तो suddenly कौन आवा कि rapid cooling है गला. आउ sodium member का crystallize होगा को time पाइबे. It will surrounds the calcium member. So it is solid solution. So हमारा eutectic case रहेला intergrowth, peritectic case रहेला reaction rim, and in case of solid solution we have zoning. Solid solution as zoning.
What is spinifex texture? It is very important texture. Spinifex texture. It will look like a bunch of grass. घास बिड़ा बंधा जो देखा हुए से वाला देखा हो कौन spinifex texture. It look like a bunch of grass. So the spinifex texture it occur between olivine and pyroxene. Olivine and pyroxene जो प्रोड्यूस हुए एग्जाम्पल आर सब मन रखा कोमाटिएट तार एग्जाम्पल हूँ रापा किवी टेक्सचर so rapa kiwi it is between oligoclase and K feldspar. So आम एमती देखती K feldspar over growth on oligoclase. स्ट्राइप पार्ट एटा हला के फेल्सपार ना कहला के फेल्सपार सेंटर पार्ट होची ओलिगोक्लेज सो कंप्लीट टा ओलिगोक्लेज थिला ग्रेजुअली के फेल्सपार ता ऊपर ग्रो हे आसुछ तो आको कहंती कोन रापा किवी टेक्सचर के फेल्सपार ओवर ग्रोथ ऑन ओलिगोक्लेज